what we discussed the other day, we had completed up to Article 18, right? Abolition of titles we did the last time, right? 19 से आज हम start करेंगे, हाँ? Hopefully आज I will complete fundamental rights का chapter. थोड़ा सा extend कर लेंगे class को. Reason being कि थोड़ा सा delay हो गया morning में, ठीक है? So we will try to extend a bit and we will try to complete it today. Clear? Right to freedom. Clear? Article 19. In our Constitution, Article 19, first of all, Article 19 discusses about freedom. Okay, and it provides 6 types of freedoms. Okay, originally it provided for 7 types of freedoms, but one freedom, was later on taken out of the list of freedoms, and it was added in a legal right, not a fundamental right. That is Article 19F, which was related to acquisition and accumulation of property. Clear that? Which you also call right to property. Clear that? Which has been made an article under Article 300A. Okay, which has been taken out of the list of fundamental rights. Uske baare mein I'll discuss a bit later. Let me come to that. Prior to that, I want to discuss these 6 freedoms with you. And first of all, I would try to make you people understand the distinction between freedom and liberty. Okay, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता. ये इंटरव्यू का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है कि फ्रीडम और लिबर्टी के बीच में आप क्या बताते हो कि what are the points which distinguish freedom from liberty? Okay, what is liberty and what is freedom? Yes, yes. Simply याद रखना, freedom means it is a broader term, it is a vaster term, and it talks about your will. It talks about free will of an individual. Clear as? Whereas liberty talks about absence of restrictions. Liberty talks about absence of restrictions, but liberty is specific. जैसे constitution में mention है liberty of thought and expression. Clear? It means liberty is specific and it is absence of restrictions. It is absence of restrictions. Clear that? But what is freedom? Freedom means that it talks about free will of an individual. It talks about free will of an individual. It talks about free will of an individual. So freedom is a broader expression. Within freedom comes liberty also. Liberty is one such specific aspect where liberty is simply absence of restriction. Clear? Then if you are a political science student, you might be understanding positive liberty, negative liberty. There are so many dimensions to it. But as a student of general studies, you need not to know that. All you need to know is that liberty is specific and it means absence of restrictions. Whenever you remove restrictions gradually from some aspects of individual's life, that is called a liberalization. You are making it liberal. You are making removing the restriction. Okay, you are taking things towards liberty. In economy, you might have heard 1991 liberalization. Okay, that was removal of restrictions by government in various sectors so that private sector can enter. Okay, that was called liberalization. So that was taking the government sector towards liberty and bringing in also private sector. In the same way, liberty is one such concept which is related to removal of restrictions. I hope it is clear to all of you. Yes, online people, sahi hai? Anybody any problem? No, sir. दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ, problem हो कहीं पे भी तो you can discuss. Okay, so what are those 6 freedoms which are provided by Article 19, and what are those 6 freedoms? How you can remember them? Okay, so to remember them, you have to focus on one acronym is there. One acronym is there that is called EA. EA, AM, EA, AM, and then RP. EA, AM, RP. Okay, these are the expressions. This is the acronym which you can remember for your right to freedom. Okay, what does the word E stands for? It stands for expressions. It stands for expression. It stands for expression. Expression, which expression? Facial expression or something like that?
I have seen polity teachers teaching students that freedom of expression means you can have any expression on your face. I have seen polity teachers, IAS faculties in my proud Jammu and in rest of the part, that you can have any expressions, like you can do this, you can do that, you can have angry expressions, you can have smiling expressions. It is not like that. Expression means you can express yourself verbally, in written, or any other way. You get the point? So expression means non-verbal and verbal. Non-verbal and verbal. When I say verbal expressions, it means speech. It means speech. Expression means verbal and non-verbal. And when I say verbal, it means speech. Okay. So Article 19 Clause A. Article 19 Clause A talks about freedom of expression and speech. Freedom of expression and speech. Okay. Then what is this A for? A stands for assembly. A stands for assembly. 19B talks about right to freedom of assembly. You can assemble peacefully. Peacefully without arms. You can assemble peacefully without arms. You can assemble peacefully without arms. You can assemble peacefully without arms. Clear that? Peacefully, you can have a gathering, you can have a discussion. Best example of right to freedom of assembly enjoyed by the old age people sitting under the people tree and playing cards whole day. You see in the parks, old age people sit there, they take these cards, tash ke patte, and complete day they are playing cards. Clear? Freedom of assembly, peacefully, without arms. Clear that? Okay, I fear when these cards will be declared arms and they will be thrown out of that park, but I hope that never happens in respect of those elderly in our country. Okay, 19C, freedom to form association. Freedom to form association, and specific mention has also been made of one such association, that is called as cooperative societies. Freedom of association. One such association is called cooperative societies. Freedom of association. One such association has been called as cooperative society. Cooperative society. What is this Sir, cooperative? can we include the union in this article? Which union? Means association or union. Yeah, cooperative society can be included in this? Yeah, like these are like one such union. I can quote an example of student union, like, Yes, sir. or then these unions of farmers, Kisan Union. Yeah. Yes, we can include. They are also associations. Yes, very comfortably. Okay. Good. Cooperative societies was initially not there in the constitution, but very important point here you must mention. It was 97th Constitutional Amendment Act. 97th Constitutional Amendment Act 2011, which made cooperative societies as constitutional thing, and also cooperative societies were added to the 19C, that you can also make cooperative societies. Okay, what are these cooperative societies? Group of like-minded individuals which are going to have specific goals and they are going to struggle for that goal. Okay, they are called cooperative societies. They have decided to cooperate on a particular issue and they will formulate their strategy and action plan to achieve that goal. They are called cooperative societies. Clear? Then, हाँ, इश्तियाक, आपने जो पूछा ना, ये स्टूडेंट यूनियन, किसान यूनियन, ये बना सकते कि नहीं, इंक्लूड हो सकते हैं? ये बिल्कुल इंक्लूड हो सकते हैं, अनलेस देयर इज अ यूनियन कॉल्ड ड्रग पेडलर्स यूनियन. ओके, ये नहीं हो सकता. ओके, थीव्स एसोसिएशन ऑफ J&K, ये नहीं हो सकता. You get the point? That association or union which is formed must be formed with a noble vision, with a vision that is for the larger benefit of the society. Clear that? They might have their individualistic benefit also, but that benefit must not be anti-social. That benefit must not be anti-social. Clear? Okay, sir. So then there is freedom of association, Article 19, Clause D. Freedom of movement. You can move
freely. You can move freely across the country, not without documents. With documents, with proper, objectives, you can move freely across the country. You get the point? And in this freedom of movement, there was a question asked that if there is a freedom of movement, then Seema Haider is also free to move from Pakistan to Dubai to Nepal to India. But this freedom of movement is not available, across borders. Across borders. Moreover, Seema Haider is not an Indian citizen. Seema Haider is not an Indian citizen. Okay. Anju was an Indian citizen, and Anju had this freedom of movement, and she went with all the legal documents because she was under the obligation of Indian constitution. So it is applicable to only those who are constitutionally part of India. You get the point? Not on those who are not part of India. Suppose a person who is from outside India, suppose an American, but is residing in India, unless some specific restrictions are put on that American, he can enjoy freedom of movement within India. He can be one day in Kerala, another day he can be in Jammu Kashmir, another day he can be in Hyderabad also. Okay, another day he can be in Maharashtra beating the journalists and beating the police wallahs. Okay, you went through the news. This American citizen residing in Mumbai, some police went for verification and he to exchange blows with them. Okay, so basically what I want to say is that freedom of movement is restricted to basically those who are under the constitutional domain of India. Those who come from abroad, they will say that we have freedom of movement, that's why we came from there to this country. No, it's not like that. They are under the obligation, constitutional obligation of their parent country, which they violated in all the forms, all the sorts. Okay, now this is freedom of movement throughout the country, throughout the territory of India. You can also write freedom of movement throughout the territory of India. Okay, territory of India. When I say territory, territory includes political boundary plus territorial waters, not the embassies, not consulates. No, that is in economics. And uske liye territory in economics में I have made the word domestic territory, if you remember. ठीक है? तो ये territory word is significantly different from domestic territory. Okay, अब domestic territory क्या है ये जानने के लिए economics की classes will be starting from 20th. I'll tell you all the details, all the possible details there. Clear? Okay. Then also freedom of movement of residence. Okay. Freedom of movement of residence. You can move and reside in all parts of the country. Anywhere, wherever you want, you can reside. Nobody can snatch that right from you. Okay. Residence. What by residence you mean you can settle in any part of the country. Okay. To this, there are certain restrictions. Okay. There are certain restrictions mentioned in part mentioned in 5th and 6th schedules, which deal with tribal areas. I'll discuss separately. There are certain restrictions. You cannot enjoy your freedom of movement in those areas. Okay, freedom of residence is not available in certain areas. It is restricted in certain areas like tribal areas, like other areas. Clear? Then this was Article 19D, 19E. Okay, 19F has been, removed, and you can just mention that it was related to property, related to acquisition and accumulation of property. It was related to property, it has been removed. It was related to property, acquisition and accumulation of property, and now it stands removed. It stands removed. Clear? Now the 19G, it is related to profession. It is related to profession, occupation. You can practice any profession, you can practice any occupation, and you can have any trade and business. You can have any trade and business which is unrestricted as per the constitutional law. Suppose some business, some trade is restricted by constitutional law, you cannot set up that trade and business in your country. Okay, business in your country. Clear? Now, when did this happen? When was it removed? You have to remember this also.
This was removed by 44th Constitutional Amendment Act 1978. 44th Constitutional Amendment Act 1978 removed Article 90F, and also it had made changes in Article 31, and also it had added one article, that is Article 300 Clause A, where right to property has been made a legal right. Here, right to property has been made a legal right. Why did this amendment? Right to property has been made a legal right. Right to property has been made a legal right. Okay. Now, what is this legal right? Legal right is a right which is backed by law. Fundamental right is a right which is provided by the Constitution itself. You cannot violate fundamental right. You cannot abridge or abrogate fundamental right. And an individual has a direct access to Supreme Court directly without going to district court, high court, following the hierarchy of judiciary. No, you can directly go to Supreme Court if your fundamental right is violated. You get the point? But for legal right, you have to follow the hierarchy. District courts first, then high court, then Supreme Court. Get the point? Okay. So this is the difference. Now, right to property. Why this right to property was made illegal, right? There is a small story behind it. When India got independence, right to property was a fundamental right. But then there was so much difference between people with huge amount of lands and people with no land at all. Clear that? So there was this class formation of zamindars, non-zamindars, landless and land people with huge land holdings and landless laborers. Clear? This class distinction was to be ended. Number one. Number two, when it was fundamental right, government had to acquire a lot of land for construction of roads, construction of railways, construction of industries, manufacturing units, business hubs, factories, all were to be established. Clear that? Government could not acquire this land from the people. People refused it. It is our fundamental right. No, we are not giving this land to you. Okay. Then an amendment was passed later on in order to bring land reforms also, in order to make it easier for the government, and also to make less economic distinction. Okay, to make this zamindari system and other things very irrelevant to Indian scenario. You get the point? That's why this amendment was passed and it was taken away from the list of fundamental rights, so that whenever state requires acquisition of land, it can acquire land very easily. Get the point? मेरा स्पीड प्रॉब्लम तो नहीं है? फास्ट तो नहीं जा रहा मैं? क्या नाम है आपका? इलाफत। और आपका? आदिल। नाम पूछूंगा मैं कम से कम हफ्ता 10 दिन लगातार पूछूंगा, याद रखने में दिक्कत होती है। ठीक है? हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? एजाज, प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? किधर गया दूसरा? दीक्षित? अच्छा, आदिल आपको समझ में आ रही है प्रॉपरली? आप भी आदिल हो ना? 2 आदिल हो गए आप। ठीक है? हाँ, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? यस, इलावल, इश्तियाक। अच्छा, दीक्षित ऑनलाइन? No, sir. दीक्षित इज ऑनलाइन, वेरी गुड। आर्ची, आयशा, ठीक है। So this is all you need to know about Article 19 and its internal details. Article 19 and its internal details. But I must tell you one thing. There is one word mentioned in Article 19 itself, that state can put reasonable restrictions on all these fundamental rights. Okay. Now, when the word reasonable restrictions come, जब भी किसी पे restrictions हो, चाहे वो reasonable हो, चाहे वो individual restrictions हो, तब वो चीज absolute नहीं रह जाती। अब अगर आपसे कोई पूछे are fundamental rights absolute or not, आप क्या बोलोगे? They are not absolute. They are not absolute. Okay. But what are they? They are absolute की जगह क्या होता है? Qualified. Qualified means there are certain conditions in which they are applicable, certain conditions in which they are not applicable. So fundamental rights are not absolute, rather they are qualified. Okay, any doubt? कोई किसी को दिक्कत है इसमें? Article 19 में? If you have, please ask. I can entertain questions n number of times, but जब मैं पूछूं तब मुझे अच्छा लगना चाहिए कि I must, get the answer very properly. Yes? तो जब मैंने आपको बोला वर्बल और नॉन वर्बल स्पीच, नॉन वर्बल की एग्जांपल्स बता सकते हो आप? You can express your views in print media also. You can express your opinion in
newspapers also, picture, pictography, okay, cartoons, all come under right to freedom of expression, okay, unless they are derogatory, unless they are anti-national, unless they are against the verdict of court, that is called contempt of court. All these things must not be violated. जो मैं statements बोलता हूँ ना, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, if possible लिखना भी चाहिए. मेंस वाले जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें तो लिखवा देता हूँ मैं, मेंस के लिए तो लिखवा ही दूंगा मैं, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसको इंक्लूड करता है. Yes, contempt of court is also taken care of in freedom of expression. Clear? और commercial advertisement वगैरह ये सब चीजें जो हैं ये किस में आती है? All are in the advertisement or in the expression thing. Okay, but the domain of decency and morality has to be maintained at any cost. Decency and morality has to be maintained. Anything, any expression which is indecent or which is immoral cannot be considered as a part of fundamental rights. Clear that? Huh. Okay. So this was right to freedom of speech for you. Okay. Assembly. When I said assembly, freedom of assembly, can this right be abrogated? Yes. In case of law and order is in threat. You might have heard kai dafa. You might be no. So many times you might have heard one thing that is called section 144. बोल रहे ना 144 लग गया. What is this 144? It is section 144 of criminal procedure code, CRPC, criminal procedure code, section 144. Okay. Under this, magistrate of the district can restrict the freedom of assembly. District magistrate can restrict the freedom of assembly if there is a threat, if there is an insecurity, if there is a threat to law and order. All those things can be taken care of. Okay. अब कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी तरह से मूवमेंट बंद न करने की जगह क्या करते हैं, 2 4 5 लोगों की मूवमेंट बंद करते हैं. ठीक है, उस केस में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन्वोक्स सेक्शन 141, सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पीनल कोड. ओके, सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पीनल कोड. ओके, इंडियन पीनल कोड. क्लियर? क्लियर है? अब मैं अब एक्सेप्शंस पे आ रहा हूं, मैं एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहा हूं अब, है ना. एक मैंने आपको बता दिया फ्रीडम ऑफ यूनियन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? जब यूनियन बात कर रहा हूं मैं, तब मैंने सपोज आपको बोल दिया कि एक यूनियन बन गया जिसका नाम है ट्रेड यूनियन. इसका नाम क्या है? ट्रेड यूनियन. अब ट्रेड यूनियन बनना तो फंडामेंटल राइट है, बट ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कभी भी डिक्लेयर कर दे, लॉकडाउन कभी भी डिक्लेयर कर दे, टोटल लॉकआउट कभी भी डिक्लेयर कर दे, नो, that will be governed by the industrial laws, that will be governed by industrial laws. Okay, हमारी कंट्री में इस समय इंडस्ट्रियल लॉज कई सारे क्लब होके 4 लॉज हो गए हैं. ठीक है, वन इज कॉल्ड कोड ऑन लेबर. ठीक है, वन इज कॉल्ड एज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी. ओके, देन देयर इज कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड देन कोड ऑन वेजेस. क्लियर दैट? सो दीज 4 कोड्स जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम, लेबर कोड्स, ठीक है, ये सारे कोड्स डील करते हैं स्ट्राइक्स एंड अदर थिंग्स के साथ इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन बनाना फंडामेंटल राइट है, बट ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियन कभी भी स्ट्राइक डिक्लेयर कर दे और ये कहे कि हमारा फंडामेंटल राइट है. नो, इट इज नॉट. ओनली ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, बट डिक्लेयरिंग स्ट्राइक एनी टाइम इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. क्लियर दैट? ओके. देन ऑल्सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बता दो. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो हर सिटीजन के लिए अवेलेबल है. ठीक है, बट यू नो ड्यूरिंग कोविड दिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाज स्नैच्ड. It was completely restricted. You cannot move out even prior to that. Even sometimes in 1980s, Bombay High Court declared that these patients suffering with the disease called AIDS, they cannot move to any places. They cannot move to wherever they want. There were certain restrictions on their movement. Okay, and restrictions on movement in tribal areas. Schedule 6, Schedule 5th, all these are basically restrictions on freedom of movement. Yes.
When any disease, any hazard, any natural illness, suppose there is a threat that that area is going to face, coastal India is going to face cyclone, maybe God forbid, let us say cyclone is going to hit this region. Okay, in this region, your freedom of residence can be snatched. Reasonable restrictions are there. Okay, now I told you next क्या बताया था इसके बाद association union के बाद freedom of residence. Residence के case में you have to mention one thing important. Sorry, movement था ना. हाँ, मूवमेंट दो किस्म का होता है, मूवमेंट विद इन द कंट्री and movement outside the country. Now, somebody comes from Kerala and settles in, moves to Kashmir or Maharashtra. Very easily, no issues. Freedom of movement under Article 19. Clear? But somebody takes a route from Rajasthan and settles down in Pakistan. It is a sort of movement, but it is movement outside the country. It is her right to life and liberty, Article 21, which protects her, which gives us this right to move outside the country wherever you want. It's your life. You decide whether to settle in India or settle outside. Clear? But not Article 19. Article 19, I told you, within the constitutional boundary of our own country. Clear? Okay? So freedom of movement is this. Okay. Freedom of residence, I told you, only certain areas which have been banned for restrictions, particularly for the tribal areas, so that tribals can protect and safeguard their culture, language, their own distinctive identity. For that matter, article this freedom of residence has been restricted, that you cannot reside in tribal areas. Okay. And professions, I told you already, no harmful, no unethical, and no unethical, no immoral profession you can carry. You cannot carry this drug trade, which has been restricted. Okay, so freedom of trade, these are restricted to have certain restrictions under morality. Clear that? Okay, this was Article 19 for you. Very, very easy and very, very simple. Okay, now Article 20. Article 20. Article 20, very, very important article in Indian Constitution, although very rarely invoked, but yes, it is very much there. It is one of the protector of, citizens against the arbitrary and excessive punishment from the legal, from the authorities, government authorities. Okay, Article 20 is basically, it gives protection against conviction. It gives protection to an individual against conviction. Protection against conviction for offenses. Okay, here offenses are not defined. But yes, number of offenses: theft, burglary, murder, any of the offense. Okay, even violating some traffic signals is also an offense. Okay, Article 20 protects an individual from the state, so that state shall not arbitrarily punish an individual. Now, Article 20 has certain dimensions which you have to remember. How does it protect an individual? It has basically three dimensions. Okay, number one is no double jeopardy. Number two, no ex post facto law. No ex post facto law, and no self-incrimination. These are the three things which are basically important, you must understand in Article 20. Okay, what is no double jeopardy? Number one, an individual cannot be trialed for the same offense twice. Same offense. कई जगह statement आया
an individual cannot be tried for same kind of offense twice. True or false? An individual cannot be tried for same kind of offense twice. सेम काइंड, मान लो उसने एक बार मर्डर कर दिया, फिर एक बार और मर्डर कर दिया, दोनों बार ट्रायल चल सकता है, लेकिन सेम ऑफेंस के लिए दो बार नहीं। एक बार हो गया उसका ट्रायल, वट एवर डिसीजन इज, उस पर बात हो सकती है, लेकिन अब ट्रायल दोबारा नहीं हो सकता। तो नो डबल ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए आप दो बार किसी भी इंडिविजुअल को क्या कर सकते हो, प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं कर सकते। या नो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट टू ए क्रिमिनल फॉर ए क्राइम मोर देन वंस। दूसरी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो इसको, नो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, नो प्रोसिक्यूशन ही ट्रायल का नाम है, नो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट फॉर एन इंडिविजुअल more than once, more than once for an offense। एक ऑफेंस जो कर लिया उसने, उसके लिए मोर देन वंस आप उसको क्या कर सकते हो, प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते और पनिश भी नहीं कर सकते। Sir, I had a question. या Sir, for a single offense, if a FIR is registered in the different part of the country in different courts, so Yeah. the person is prosecuted in the same court or the different courts of the country? basically suppose there are different FIRs lodged for an individual for the same crime at different places, that individual has right to get all those FIRs clubbed first. His advocate will plead that this FIR on this case, on this crime is lodged against me in this and this place. Okay, three places it will get clubbed, and then the nearest to the residence, the police station or the area nearest to the residence of the criminal will be chosen as the place where the prosecution will start. Prosecution will start at one place only. Get the point? Okay, sir. No two cases can be prosecuted at no one case can be prosecuted at two different places. Clear that? Okay. Now, no ex post facto law. No ex post facto law. Clear that? इसीलिए एग्जांपल सुनो, पहले एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है। 14th of August 2022, Mr. X commits a crime that is called theft. That is called theft. Say for example, okay? कब commit किया? 14th of August 2022. इस दिन लॉ था कि थेफ्ट जिसने करा है उसका 3 years imprisonment करो। ओके, अब इसके ऊपर केस चला। इंडिया में देयर इज अ रूल दैट इज कॉल्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हालांकि मुझे समझ नहीं आता वो कैसा इनोसेंट है कि वो जब तक ना गिल्टी प्रूव होता है तब तक भी जेल में रहता है, और गिल्टी प्रूव हो गया उसके बाद भी जेल में रहता है, और उससे पहले तो था ही जेल में। और अगर इनोसेंट प्रूव हुआ तो फजूल में 10 साल की जेल काट के आ गया। समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशनल फेलियर है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले हो जाता है जस्ट मतलब ना लीगल प्रोसीजर्स में। क्लियर? माय पॉइंट इज कि 14 अगस्त को इसने क्राइम करा, प्रूव होते होते हो गया सितंबर 2025, सितंबर 2025। क्लियर दैट? उस दिन तक 24 में अमेंडमेंट आ चुका था। थेफ्ट के लिए दो केसेस है। थेफ्ट के लिए एक केस ये हो सकता है कि 4 years कर दी हो सजा, और दूसरा केस ये हो सकता है कि 2 years कर दी हो सजा।
ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, इसने लॉ कब वायलेट किया था? तो व्हेन ही कमिटेड द क्राइम ही वायलेटेड द लॉ। ओके, पनिशमेंट चाहे 10 साल बाद भी प्रूव होगा, ये पनिशमेंट विल बी एज पर द लॉ विच ही वायलेटेड एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द क्राइम। पनिशमेंट विल बी एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द क्राइम, ना उससे पीछे का कोई लॉ उस पर इंप्लीमेंट होगा, ना उसके बाद का कोई लॉ इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, बाद में जब 4 साल हो गई, अगर इसको 2025 में ये प्रूव हो गया और उस टाइम पे पनिशमेंट हुई 4 साल, ठीक है, आप उसको 4 साल पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि दिस लॉ इज पोस्ट फैक्टो व्हेन द एक्शन हैज टेकन प्लेस। ये उसके बाद का लॉ है। ठीक है, ये उसके बाद का लॉ है। ठीक है, एक छोटी सी यहाँ पे रिलैक्सेशन है क्रिमिनल के लिए। अगर 2 साल हो गई हो पनिशमेंट, तो अब उसको ओरिजिनल लॉ वायलेट करने पे कितनी हो रही है? 3 साल। सो अब वो चाहेगा कि मुझे इसके थ्रू क्या हो, इसके थ्रू मेरे मेरे साथ डील किया जाए, मुझे 2 ही साल की पनिशमेंट दी जाए क्योंकि आज के लॉ। तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, एक्स भी नहीं लगेगा, उससे पहले का लॉ भी नहीं लगेगा, पोस्ट उसके बाद भी नहीं लगेगा। पोस्ट फैक्टो मींस व्हेन द एक्टिविटी, व्हेन द क्राइम हैज टेकन प्लेस, उसके बाद का लॉ भी नहीं लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन कहीं एक लीगल प्रोसीजर में इसी एक्ट के अंदर, इसी आर्टिकल के अंदर एक क्लॉज है कि अगर बाद वाले अमेंडमेंट वाले लॉ में पनिशमेंट पिछले वाले से कम है, तो क्रिमिनल कैन रिजॉर्ट फॉर दैट, क्रिमिनल कैन रिजॉर्ट फॉर दैट, बट नॉट हायर देन द ओरिजिनल लॉ। ओरिजिनल लॉ से अगर हायर पनिशमेंट हो, तब वो इसके लिए रिजॉर्ट नहीं कर सकता और कोर्ट उसे इतनी पनिशमेंट ऑर्डर नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये 3 ईयर है, इसमें अप टू लिखा होता है, अप टू 3 ईयर्स। तो कोर्ट 2 साल भी दे सकता है, 1.5 साल भी दे सकता है, 2.5 साल भी दे सकता है, लेकिन नॉट मोर देन दिस, क्योंकि चाहे आज की डेट में मान लो 4 ईयर्स ही है इम्प्रिजनमेंट फॉर थेफ्ट। समझ में आ गया? तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के 2 डायमेंशंस है। पहला, कि एक इंडिविजुअल को आप पनिश कर सकते हो किस चीज के लिए? सिर्फ उस क्राइम के लिए जो उसने किया हो और तब जो लॉ उसने वायलेट किया हो, नंबर 1। नंबर 2, आप एक इंडिविजुअल को पनिशमेंट कितनी दे सकते हो? जितनी मैक्सिमम उस क्राइम की पनिशमेंट थी, कब? जब उसने वो क्राइम किया। ओके, सो यू मे जस्ट मेंशन इट वेरी शॉर्टली, वेरी शॉर्टली। No retrospective, you can write no retrospective implementation of penalty, no retrospective implementation of penalty. ओके, नो क्या लिखा है मैंने? हाँ, नो रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है बैक डेट से किसी चीज को अगर आप इफेक्ट देते हो। नो रिट्रोस्पेक्टिव implementation of any penalty, point number 1. Okay, point number 2, point number 2, no penalty, no penalty greater than the, greater than that prescribed by, greater than that prescribed by law, prescribed by law in force, law in force, prescribed by law in force at the time of commission of the act, at the time of commission of the act. ओके, हो गया आपको? ध्यान रखना एक चीज का, मैंने क्या लिखवाया? नो रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी पेनल्टी। ओके, उसके साथ ब्रैकेट में लिखो एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली फॉर criminal laws,
applicable only for criminal laws. क्रिमिनल केसेस, अगर किसी ने कोई क्राइम किया हो ये सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है. अब किसी ने टैक्स से रिलेटेड टैक्स चुराया है, गवर्नमेंट का टैक्स छुपाया है, ठीक है, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन और सिविल लॉज कैन बी रिट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड. इसीलिए कुछ कंपनीज वोडाफोन को 2014 में 2009 से लेकर 2014 तक का टैक्सेशन पे करना पड़ा. राइट, यू गेट द पॉइंट. वोडाफोन एंड हचिसन केस, वेरी पॉपुलर केस, इट वाज अ केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. कभी इकोनॉमिक्स में डिस्कशन अगर आया तो मैं बताऊंगा. ठीक है, माय पॉइंट इज कि क्रिमिनल लॉ पिछली बैक डेट से इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, सिविल लॉ या फिर टैक्सेशन रिलेटेड लॉज हो सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, क्राइम करते समय जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी, अब उससे ज्यादा पनिशमेंट कभी भी आपको उस क्राइम के लिए नहीं मिल सकती, चाहे वो डिसाइड केस आपका 10 साल बाद भी हो. समझ रहे मेरी बात को? आदिल समझ में आया आपको? ठीक है. तो दिस इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. इसकी 2 डायमेंशंस बता दिए आपके. अब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. नो सेल्फ So I had a इंक्रिमिनेशन. question, sir. या Sir, for example, if a two person commit the same crime, and one get bail, the other person doesn't got bail. Can he got bail through doctrine of parity? depends upon under which circumstances both have committed the crime. Okay, doctrine of parity looks for the circumstances. If their circumstances are comparable, if they are in the same circumstances that they have committed, से दोनों भूख से मर रहे थे, चोरी कर ली दोनों ने खाना खाने के लिए, ठीक है, तो then they were in the similar situation. You can compare situation of both. You can treat them under doctrine of parity. Mr. A has got bail, he has committed the same crime in same circumstances. Mr. B can use this and doctrine of parity and get the bail under this. Clear that? But circumstantially they should be situated similarly. If their circumstances are different, इसने चोरी की से शौक है, इसने चोरी की है भूख से मर रहा था, बस अपनी जान बचाने के लिए चोरी की, then doctrine of parity is not applicable where the circumstances of those who commit the crime are similar. If their circumstances are not similar, doctrine of parity cannot be implemented. समझ में आया जाकिर? जाकिर, you get the Yes, sir. clear हो गया आपका? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. Now no self incrimination. Self incrimination means you cannot yourself be a witness for your own crime. You cannot yourself be a witness for your own crime. Okay, means criminal cannot be compelled to be a witness against himself. Criminal cannot be compelled to be a witness against himself. To be a witness against himself. Criminal cannot be forced to be a witness against himself. Criminal cannot be forced to be a witness against himself. Any doubt? Any question? Yes, please. If you have any question, I can take them. Okay. So, सेल्फ इंक्रिमिनेशन पे फाउंडेशन कोर्स में हम एक बहुत अच्छा जोक सुनाते हैं, बट आई कैन टेल यू हियर ऑल्सो अगर आप चाहते हो तो. हाँ, यस सर, सुनाइए सर. इश्तियाक टेक्स कीन इंटरेस्ट इन थिंग्स. सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पॉइंट क्या है? आप क्रिमिनल को फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ खुद ही गवाही दे, ठीक है, वरना तो हमसे पीट पीट के कबूल करवा लें जुर्म उसका, ठीक है. हाँ, केरला, highly educated people with great skill and great management. Clear that? Okay. Jammu Kashmir, corruption में number 1. Clear? Punjab, number 1 in using brute force. Get the point? Kerala के पुलिस वाले से कहा how to catch a tiger. He said, sir, Newton's third law will be used. To every action there is an equivalent and opposite reaction. We will run away from the tiger, tiger will run towards us, and we will make a trap and we will catch the tiger. Similar, some plan also, some net lay, we will lay the net at this distance and we will use this much of energy and we will
catch the tiger. Okay. Jammu Kashmir people, how will you catch the tiger? He said, we will go and bribe under secretary to the government forest department, and also we will bribe the zoo authorities of India. We will also bribe the wildlife authorities of Jammu and Kashmir, and we'll tell them, give us the tiger. When they give the tiger, we will claim that humne tiger, we have caught the tiger. Okay. Punjab police, how will you catch the tiger? He said, we will not catch a tiger, we will catch a cat. We will beat the cat until it accepts that it is a tiger. Get the point? तो वो कैट से गवाही दिलवाएंगे, खुद ही सेल्फ इंक्रिमिनेशन करवाएंगे कि वही टाइगर है. ठीक है, पकड़ना ही नहीं है चीता, बिल्ली पकड़नी, उसे मार मार के कबूल करवाना है, वही चीता है. गेट द पॉइंट? सेल्फ इंक्रिमिनेशन. यही हाल क्रिमिनल्स का भी होता अगर सेल्फ इंक्रिमिनेशन का लॉ नहीं होता. पुलिस पीट पीट के क्राइम कबूल करवाती कि बोल तूने क्राइम किया है. ठीक है, वो बोलेगा नहीं किया, अब उसको पता है मेरी जान ही जाने वाली है. बेटर ये है कि मैं क्राइम कबूल करूं, जेल में रहूंगा, कम से कम जिंदा तो रहूंगा, या देर सवेर 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल बाद छूट तो आऊंगा. गेट द पॉइंट? सो दिस इज व्हाई सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला आर्टिकल इज देयर. ठीक है इश्ताक, आई होप यू एंजॉयड द जोक. Yes, sir. Article 21, very detailed article, very detailed, very interesting. Article 21. What is Article 21? Protection of life and personal liberty. Okay, good. Protection of life and personal liberty. What is थोड़ा सा बता सकते हो डिटेल में, what is personal liberty? Sir, subject to procedure established by law. Okay. Protection of life and personal liberty. इसमें ना लाइफ का सबसे वास्ट डेफिनेशन है. लाइफ का सबसे वास्ट डेफिनेशन है. You cannot deprive any individual of his breath, of his right to live. बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस वजह से you cannot give capital punishment to an individual. फांसी भी नहीं आप दे सकते, क्राइम कैसा भी हो, क्योंकि उसकी लाइफ ही छीन लेता है. But if it is in the larger public interest, plus then another clause was added, rarest of the rare cases, rarest of the rare clause. Okay. So life का the definition is very widest definition of life. Okay. But पर्सनल लिबर्टी का डेफिनेशन धीरे धीरे ना एक्सपैंड हुआ है. पर्सनल लिबर्टी का डेफिनेशन वाज नॉट एज वाइड एज इट टुडे. ठीक है, आज के डेट में अगर आपके घर वाले आपको सुबह जगा देते हैं, टेक्निकली आप कोर्ट जा सकते हो कि ये हमें सोने नहीं देते. हाँ, घर वाले फोर्सफुली सब्जी लाने भेज रहे, आप कोर्ट जा सकते हो. ठीक है, यहाँ से जाके मम्मा को नहीं बोला मम्मा सब्जी मैं नहीं जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा. ठीक है, मम्मा हैज ऑल द ट्रीटमेंट, मम्मा हैज ब्रूम इन द हैंड, ब्रूम झाड़ू बेलन, ठीक है, जूता चप्पल, मम्मा हैज ऑल द ट्रीटमेंट्स. ठीक है, मम्मा के सामने कुछ नहीं चलता है, लेकिन ओवरऑल यू हैव दिस राइट. ठीक है, अब कहीं घर में एक्सरसाइज करने लगोगे, बोलेंगे पता नहीं कहाँ से पढ़ के आतंकवादी बन रहे घर में ही, है ना. तो पर्सनल लिबर्टी का फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कब आया? देयर वाज अ केस कॉल्ड गोपालन केस. गोपालन केस ऑफ 1950. फर्स्ट टाइम व्हेन द लिबर्टी डेफिनेशन इट इज, अगर पूरा केस लिखना हो लिख सकते हो, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. ओके, वर्सेस भी याद रखना, ईयर भी याद रखना. ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका पर्सनल लिबर्टी का बड़ा नैरो व्यू लिया. बड़ा कौन सा? नैरो व्यू. In A.K. Gopalan case, the narrow view of liberty was taken. Narrow view of liberty was taken. What was the narrow view of this liberty? Narrow interpretation that, first of all, life and liberty cannot be snatched through executive action. Through executive action. कोई भी अथॉरिटी, सॉरी, इनिशियली थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन. ऐसा कोई भी लॉ आप नहीं बना सकते, ऐसा कोई भी लॉ आप नहीं बना सकते जिससे किसी की लाइफ
या लिबर्टी चली जाए, दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव एक्शन. यू कैन नॉट मेक एनी लॉ through which the life or liberty of an individual can be taken away. This is called through legislative action. Okay. ठीक है. ऐसा क्यों कि आपने अगर लॉ में प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर दिया, आपने प्रोसीजर सही फॉलो कर लिया, फिर उससे किसी की जान भी चली जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी विल फोकस ऑन द प्रोसीजर. सो दिस वाज ड्यू टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. लेकिन अब आज की डेट में वी कैन ऑल्सो नॉट स्नैच द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन. किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऑर्डर से भी हम क्या नहीं कर सकते, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आज भी आप छीन नहीं सकते. दिस हैज मेड द इंटरप्रिटेशन अ बिट wider. Okay. And when did this happen? This wider interpretation of Article 21. Article 21 ka wider interpretation was given in Maneka Gandhi versus Union of India case 1978, when Supreme Court overruled its judgment of the Gopalan case. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हो सकता है, लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू नहीं हो सकता. लेकिन मेनका गांधी केस में क्या कहा, दोनों के थ्रू नहीं हो सकता. यू कैन नॉट स्नैच द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल. दिस वाज डन इन मेनका गांधी केस 1978. क्लियर? Now one more thing in Maneka Gandhi case was added to this right to life and personal liberty. It said that right to life does not mean mere animal existence. Life does not mean mere animal existence. Means as an animal you are breathing, you are excreting, you are eating. No, you should have respectful life, respectable life. Okay, right to life with dignity. Right to life with dignity. So this dignity thing was added by Supreme Court in right to life in the Maneka Gandhi case. Moreover, Maneka Gandhi case elaborated the list that what does fall in the right to life and personal liberty. Okay, Maneka Gandhi case में elaborated the list of what is a part of right to life and liberty. Sleep, eat, right to remain silent. ठीक है, वो लोग सुन ले जो एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, फोन पे कब से साइलेंट बैठे हो. दे हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट. ठीक है, वो बोले या नहीं बोले वो उनकी पर्सनल चॉइस है. घंटों भी खामोश रह रहे हैं अगर, तो उनका राइट है. ठीक है, अगर लड़ाई क्या उस पे, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते. गेट द पॉइंट? हाँ, होता है ना, फोन पे बहुत सारे लोग इसी तरह से लड़ पड़ते हैं. ठीक है, कि तुम खामोश हो या तुम बोले ही जा रहे हो. अब बोले जाने का भी राइट है, ठीक है, लेकिन बोले जाने का राइट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना राइट रिमेन साइलेंट है. बोले जाने का राइट पता है कितना है? एज लॉन्ग एज यूर बोलना इज नॉट इरिटेटिंग दूसरे के काम. यू गेट द पॉइंट? सो बोले जाना इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग राइट एज साइलेंट रहना इज. ठीक है, तो साइलेंट रहना इज ऑल्सो पनिशमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो आप दूसरे को पनिश भी कर रहे थे कभी कभी साइलेंट रहकर, लेकिन साइलेंट रहना इज अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल राइट. ओके, राइट टू स्लीप, राइट टू नॉट स्लीप. आप सोना चाहते हो, नहीं सोना चाहते, नॉट स्लीप इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट. ठीक है, आपको फोर्स करके, शुक्र करो छोटे बच्चों को नहीं पता होता, जिन्हें 9 बजे मम्मा पीछे लग जाती है ना, उन्हें चलो तुम्हें सुलाते हैं. ठीक है, हाँ, उसमें वो क्यों, मतलब उनके उनकी जगह पे कोई दूसरा केस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अभी इमेच्योर है. ठीक है, उसका पूरा बिहेवियर डिपेंडेंट है उसकी मदर के ऊपर. ठीक है, इसका फायदा उठा के मदर 8 ही बजे भी सुला देती है कुछ कुछ बच्चों को. ठीक है, हाँ, राइट टू रिमेन साइलेंट ऑल्सो. ओके, राइट, इसमें पर्सनल लिबर्टी में राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, जल्दी जल्दी से केस वो करो. ठीक है, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, आपके हाथ नहीं बांधे जा सकते. ठीक है, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरासमेंट, बाउंडेड लेबर, फ्री एंड फेयर ट्रायल. ओके, फैमिली पेंशन, इकोनॉमिक जस्टिस. ओके,
noise pollution, sustainable development, opportunity, inhuman treatment, traveling abroad. These are all coming as a part of which article? Article 21. Article 21. Clear? Now there was no Article 21A in the Constitution. Okay, but one amendment through which fundamental education was made fundamental right, Article 21A was added through that amendment. Article 21A. Article 21A. Article 21A. Okay. What does it talks about? It is right to education. It stands for free and compulsory education to children of age group of 6 to 14 years. Okay. इसमें ना 3-4 पॉइंट्स होते हैं, कभी भी ना बहुत शॉर्टकट में तो हर जगह मिल जाती है चीज लिख कर, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 कहीं भी लिखा रहेगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, ये सवाल एक बार पूछा कि किस एज ग्रुप के लिए आर्टिकल 21A इंप्लीमेंटेबल है? राइट टू फ्री एजुकेशन 6 to 14 years. ओके। और एजुकेशन कैसी? एजुकेशन खुद कुछ भी पढ़ा सकते हो? नो, एज द स्टेट डिटरमाइंस, जैसा स्टेट डिटरमाइन करे कि क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए अपने चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स में क्या क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो आप, किस तरीके से, एज द स्टेट डिटरमाइंस, एज द स्टेट डिटरमाइंस। ओके, एंड what sort of education? It shall be free and it shall be compulsory. अब ये हुआ कंप्लीट डिस्कशन आपका 21A का, वरना राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A ये भी याद करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन इंटरनल निटिग्रिटीज में नहीं जाओगे तो दिक्कत होगा। अच्छा, मैंने जब भी आपको ये कहा है, मैंने जब भी कहा कि जब किसी आर्टिकल के साथ अल्फाबेटिकल ये आ जाए तो समझना वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल अगर नहीं है तो पक्का किसी अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुआ है, ठीक है। बता सकते हो नाम उस अमेंडमेंट का? यस, इट इज, सर। वेरी गुड, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ विच ईयर? 2002 और 2003? 2002 सर। गुड, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। क्लियर दैट? अच्छा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसने वन स्ट्रोक में तीनों पार्ट्स को अमेंड किया। फंडामेंटल राइट्स वर अमेंडेड, फंडामेंटल ड्यूटीज वर अमेंडेड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर अमेंडेड। एक डीपीएसपी में स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया, एक फंडामेंटल ड्यूटी में सिटीजन को इंस्ट्रक्शन दिया, और एक फंडामेंटल राइट्स में स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑल वर अमेंडेड इन वन स्ट्रोक, ऑल वर अमेंडेड इन वन स्ट्रोक। ओके, आर्टिकल 45 was amended in the directive principle of state policy, article 45, and in fundamental duties article 51A was amended for that matter. लेकिन article 45 में क्या, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया कि उसमें it shall be the duty of the state to provide free and compulsory education to the citizens of age group of 6 to 14 years. ठीक है, क्लियर? आदिल समझ में आ रहा है ना? पॉलिटी ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूं मैं या इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ाता हूं? पॉलिटी ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूं? आप बताओ, पॉलिटी ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूं या इकोनॉमिक्स? दोनों, आप बताओ, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स? टेक्निकली आपने सब पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक चीज सिखाने वाला, हाँ बाकी ऑनलाइन वाले लोग बताओ, मैं पॉलिटी ज्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ आपको या इकोनॉमी ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ? जिन सर लोग, मैंने तो अभी सर 3 दोनों। क्लासें ली आपकी, ये पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स की अभी नहीं ली है सर। हाँ तो पॉलिटी आप कैसे लग रहा है आपको? सर बढ़िया है सर। गुड स्टार्ट, ठीक है। जब आप इकोनॉमिक्स देखोगे तो अब तब कंपेयर बता देना, ठीक है। ठीक है सर। नवनीत सेज बोथ,
अच्छा, आप बाकी आर्ची? सर पॉलिटी थोड़ी सी इजी है तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, गुड गुड आंसर, एक्चुअली आंसर ऑफ ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, एक्चुअली द आंसर व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, मेरा तो क्या पर्सपेक्टिव है कि मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ कोई भी चीज लेकर आपके सामने, तो मेरा पॉइंट ये रहता है कि फिर आपको मेरे नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना ना पड़े, क्लास में सारा याद हो जाए, समझ में सारा आ जाए। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने में डिफरेंस कभी नहीं हो सकता, पॉलिटी इकोनॉमी या जो भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊं उसमें कभी भी नहीं। डिफरेंस हो सकता है किस चीज में, सब्जेक्ट के नेचर में। ठीक है, मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, मुझसे एक लेडी मेंबर थी, उन्होंने सवाल पूछा कि आपने ग्रेजुएशन एमएम कॉलेज से किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया। ठीक है, दोनों में क्या फर्क था और ज्यादा बेहतर कौन था, ज्यादा बेहतर कौन था? ठीक है, इट वाज प्योरली अ टेस्ट ऑफ माय बिहेवियर कि मैं इंक्लाइंड किस तरफ हूं। एम आई इंक्लाइंड टुवर्ड्स लोकल थिंग, एम आई इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ थिंग which is famous at national level? Am I someone who blames institutions and organizations, or am I someone who takes the actual view of things? मेरा जवाब क्या था कि मैम, मैं जब यहाँ पे था तो आई वॉज जस्ट 18 to 21 ईयर्स के फेज में। ठीक है, मैं जब यहाँ पे था आई वॉज 22 to 24 ईयर्स के फेज में लाइफ के। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे था मैं थोड़ा इमेच्योर था, मैं जब यहाँ पे था मैं थोड़ा मेच्योर था। ठीक है, तो यहां भी एजुकेशन अपने रीजन की बेस्ट, जम्मू के बेस्ट, यहां पे दिल्ली का बेस्ट, दोनों जगह में अपने रीजन के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, दोनों जगह में बेस्ट स्टाफ था। डिफरेंस था वो मेरी अपने स्टेज ऑफ लाइफ में था, मैं जहां इमेच्योर था वहां में ज्यादा फोकस्ड नहीं था, जहां मैं ज्यादा मैच्योर था वहां में ज्यादा फोकस्ड भी था। ठीक है, और कम्युलेटिव एफर्ट दोनों जगह का था, तो आई गॉट सेलेक्टेड। गेट द पॉइंट? अब मैंने किसी जगह को ब्लेम नहीं किया, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं किया, मैंने किसी चीज को ब्लेम नहीं किया। ठीक है, माय पॉइंट इज कि मैंने एक ऐसा आंसर दिया कि वो खुद भी सोच में रहेगी कि इसके लिए ये अच्छा था या ये अच्छा था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरे लिए दोनों अच्छे थे। ठीक है, आर्ची का आंसर प्योर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट का है कि सर नेचर ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटी का इजी, इसलिए इट स्टिक्स टू माइंड, इट स्टिक्स टू माइंड। इकोनॉमी का नेचर, बाय नेचर इकोनॉमी इज टफ थिंग। ठीक है, दैट ऑल्सो स्टिक्स टू माइंड, बट दैट स्टिक्स टू माइंड टेम्पररीली। परमानेंट उसको आपको करना होता है रिविजन्स के साथ, रिविजन्स हो नहीं पाती। ठीक है, तो पॉइंट इज कि यस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई ट्राई टू डू जस्टिस टू व्हाटएवर सब्जेक्ट आई टेक। ठीक है, हाँ, और माय, अगर आपको मुझे बोलेगा वेडलॉक किसके साथ है, माय वेडलॉक इज विद इकोनॉमी। ठीक है, हाँ, मतलब इसके पॉलिटी के साथ दोस्ती हो सकती है, लेकिन माय वेडलॉक इज विद इकोनॉमी। ठीक है, हाँ, ओके। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। क्लियर? ठीक है, नाउ राइट, नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन को फर्दर इंप्लीमेंट करने के लिए देन पार्लियामेंट आल्सो पास्ड अ लॉ, व्हिच इज दैट लॉ, कैन यू टेल मी? Compulsory Education Act of 2019, which is also known as Right to Education Act. Right to Education Act of 2009. Okay. It is also called Compulsory Education Act of 2009. Okay. Okay. Now, Article 22. रिसेट एजुकेशन पॉलिसी भी है ना सर? अब वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी समथिंग डिफरेंट है। एजुकेशन पॉलिसी, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021-22 जो है वो करिकुलम बता रही है कि एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना है, बट राइट ऑलरेडी गिवन, राइट ऑलरेडी गिवन 2002। ओके, देन एजुकेशन कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास्ड फॉर दैट मैटर आल्सो। ओके, बट सर नाउ ब्रैकेट, सॉरी सर, या सर इसमें जो
ये एज गैप था वो भी तो सर बढ़ाया है ना सर इसमें। नहीं, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस है वो करंट अफेयर्स में हम करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का राइट टू एजुकेशन के साथ लिंक नहीं है। न्यू, देखो आपका राइट है लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी में आप क्या चूज करते हो वो आपका पर्सनल फ्रीडम है, और उसके लिए लॉ है कि अगर आपको यूपीएससी करना है 50% इन ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिसिन पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक चीजें हैं। तो राइट टू एजुकेशन इज जस्ट करिकुलम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और वो क्या कितनी अच्छी है वो करंट अफेयर्स में हम करेंगे अपडेशन। लेकिन पॉइंट ये है कि इस समय राइट, फंडामेंटल राइट्स में उसको पढ़ने का कोई फन नहीं है, ठीक है। इश्ताक, यू गॉट द ओके पॉइंट? सर। हाँ, यस सर। ठीक है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, okay, article 22 and article 20 are very much related, because article 22 article 20 gives you protection in case of conviction for offenses, okay, and article 22 gives you protection against arrest and detention, okay. But again I am telling you कि सिर्फ इतना याद रखने से काम नहीं चलेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इतने से काम नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कौन हमें अरेस्ट नहीं कर सकता और क्या क्या प्रोटेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले डिटेंशन समझना पड़ेगा। डिटेंशन क्या मतलब होता है? व्हेन इंडिविजुअल इज टेकन टू कन्फाइनमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन, ठीक है। ये डिटेंशन दो चीजों के, दो तरीके से होता है। एक, अगर आपने क्राइम किया हुआ है तो फिर तो आपको डिटेन करते हैं, किस लिए? पनिशमेंट के लिए। दूसरा, अगर आपने क्राइम नहीं किया लेकिन थ्रेट है कि आप आगे कुछ क्राइम कर सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर को कर सकते हो प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। हाँ, जो 4th ऑफ अगस्त 2021 को हुआ था हमारे 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स के साथ, दैट वाज प्रिवेंटिव डिटेंशन, दैट वाज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ओके। डिटेंशन कैसा हो सकता है? या तो पनिशमेंट के लिए हो सकता है, आप किसी को पनिश करने जा रहे हो, उसने कोई क्राइम किया है, आप उसके लिए उसको पनिश करने जा रहे हो, दैट डिटेंशन इज कॉल्ड पनिटिव डिटेंशन, that detention is called as punitive detention, and second one is called preventive detention. अब डिटेंशन के लिए तो कभी भी रोक नहीं सकते आप किसी भी अथॉरिटी को, आप कोई भी अथॉरिटी आपको कभी भी डिटेन कर सकती है, पर वो अथॉरिटी कम से कम ये चीजें, कुछ कंडीशंस हैं वो फॉलो करे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इंडिविजुअल को बताओ आप उसको अरेस्ट क्यों कर सकते हो, ठीक है। फिर ये 3 चीफ मिनिस्टर्स को क्यों नहीं बताया गया था कि हमें कल आर्टिकल रिवोक करना है, इसलिए हम आपको डिटेन कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला पॉइंट प्रिवेंटिव डिटेंशन में एप्लीकेबल नहीं है, ओके। सो यू कैन आल्सो राइट हियर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसमें आपको ग्राउंड्स नहीं बताने पड़ते कि क्यों आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपको लीगल एड के लिए क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए कि आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सको या किसी लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प ले सकते हो, मतलब आप लॉयर हायर कर सकते हो, ठीक है, ओके। तीसरी चीज, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही करना पड़ेगा, प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन मत लिखो, थोड़ा सा इकोनॉमिक हो जाएगा, टू बी प्रोड्यूस्ड लिख लो, टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट within how many hours? To be produced within before the magistrate within 24 hours, within 24 hours, within 24 hours, to be produced before the magistrate within 24 hours, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें टाइम ऑफ ट्रेवल इंक्लूड किया गया है। हाँ, एक्सक्लूडेड ही मुझे भी कल तक पता था, कल रिवाइज करने के बाद मुझे पता चला
कि इसमें कई सारे लोगों ने कंटेंट किया, ठीक है, कंटेंट ये किया कि हमने केरला में क्राइम किया, केरला में डिटेंशन हुआ, व्हाई टू टेक 36 आवर्स टू रीच जम्मू एंड प्रोड्यूस अस टू जम्मू मैजिस्ट्रेट, व्हाई नॉट टू प्रोड्यूस अस बिफोर द लोकल मैजिस्ट्रेट। तो इसलिए ये इंक्लूड किया जा रहा है अब, किस चीज के लिए, ताकि ताकि इंडिविजुअल को मान लो आप एक इंडिविजुअल की कस्टडी का टाइम ही बढ़ाना है ना आपने, तो बेटर ये है कि उसको यहां डिटेन करो, आसाम के मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने के लिए ले जाओ, अगर टाइम एक्सक्लूड ही करना है ना, तो उसका डिटेंशन बढ़ गया ना 3-4 दिन के लिए। तो इसलिए कि कहीं जिस जगह पे उसका ये हुआ, डिटेंशन हुआ, उसी जगह पे लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने पहले उसको प्रोड्यूस करना है विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स। ओके, और अगर मैजिस्ट्रेट ने कहा नहीं कि इसको एक्सटेंड करो थोड़ी देर और इसको रखो अपने पास, विद इन 24 आवर्स ही हैज टू बी रिलीज्ड। ओके, सो फोर्थ पॉइंट क्या है, टू बी रिलीज्ड, टू बी रिलीज्ड within 24 hours if not produced, if not extended, if not extended by the मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट ने एक्सटेंड नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स फिर क्या कर सकते हो आप, हाँ 24 आवर्स अगर हो गए एक बार और मैजिस्ट्रेट ने एक्सटेंशन नहीं किया उसकी डिटेंशन का, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिलीज करना पड़ेगा। ओके, अब आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं, ये चीजें याद रखना, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल कोर्ट के ऑर्डर पे ही अरेस्ट हुआ, फिर तो ये चीजें जरूरत ही नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर किया ना, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों प्रोड्यूस करोगे, पता ही है कोर्ट ने ऑर्डर किया अरेस्ट करने को, अरेस्ट हो गया वो बंदा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कर दिया, उसका वारंट निकाल दिया, अरेस्ट वारंट, मींस जिसका भी अरेस्ट वारंट निकल गया खुद से, उस केस में आर्टिकल 22 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें ग्राउंड्स भी पता है, उसमें टाइम भी पता है कितने टाइम के लिए उसको अरेस्ट करना है, और अरेस्ट करके किस अथॉरिटी के सामने पेश करना है वो भी डिफाइंड है, तो लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, दूसरा कि अगर कभी इंसान ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, कोई कॉजी क्रिमिनल एक्ट किया है, या कोई ऐसा एक्ट किया है, कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करे, उस केस में वो अरेस्ट और डिटेन हो सकता है, और उसके लिए फिर ये सारी रेमेडीज एप्लीकेबल है। गेट द पॉइंट? ओके, देन ऑल्सो मान लो कोई इंसान है जो वो तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में ग्राउंड फाउंड्स इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट बी मोर देन 3 months, ओके, बट इट कैन बी एवरी टाइम एक्सटेंडेड बाय 3 months n number of times. It can be extended by another 3 months by n number of times. Okay. So, which authority extend the trial? Yeah. Home Ministry or someone else? No. Excellent question. There is a board for that matter. Board extends the preventive detention. In that board, members can, no composition is defined, but at least one member must be judge. Others can be anyone, not defined, but at least it must consist judge of high court at least. Okay, and no member from legislature can be a part. No member from legislature can be a part. Clear? So this board basically extends. So Home Ministry cannot do anything in this case. Home Minister cannot do it because legislature cannot be a part of it. You get the point? So it is extended by a board, and board consists of judges of high court. High court.
But sir, in case of Hurriyat leader home arrest, the letter was come from the Home Ministry. Now, write down one special clause. One special clause is there. One special clause is number one. Special clause is number one. Article 22 authorizes Parliament. Article 22 authorizes Parliament. Okay. So it was addressed from Home Ministry, but it was passed in Parliament. Okay. Authorizes Parliament. Authorizes Parliament to prescribe circumstances and classes. To prescribe circumstances and classes in which a person can be detained under preventive detention law. A person can be detained under preventive detention law. Under preventive detention law. Without obtaining the opinion of the board. Without obtaining opinion of the board. Without obtaining opinion of the board. Okay. एक तो क्या ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि आप बता सकते हो किन सर्कमस्टांसेस में एक बंदे को विदाउट ऑब्टेनिंग द एडवाइस ऑफ द बोर्ड यू कैन डिटेन हिम. ओके. नंबर वन. Number two, extension of such detention is also determined by Parliament in special cases. Extension of such detention. Okay. In such cases, Parliament also advises the board what procedure should be followed to conduct the inquiry. Okay. Parliament should also advise the board regarding the procedure of conducting the inquiry. Regarding the procedure of conducting the inquiry. Regarding the procedure of conducting the inquiry. These are special circumstances. These are special circumstances. Clear? Now, there are various preventive detention laws which have been made in the country. Okay. So you, अब मेंस के लिए आप पढ़ नहीं रहे, otherwise मेंस में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, that is called preventive detention versus right to life and personal liberty. Versus right to life and personal liberty. कई सारे ऐसे एक्ट्स पास हुए जिनकी वजह से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को थ्रेट हुआ और वो फिर रिपील हुए. वो फिर क्या हुए? रिपील हुए. बेस्ट एग्जांपल क्या है उसका? देयर वाज एन एक्ट कॉल्ड पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट. ओके. which was initially brought in 2002 and it was repealed in 2004. Why it was repealed in 2004? Because it was against the right to life and personal liberty of individual. Clear? Then also before POTA there was one act that is called TADA, Terrorist and Disruptive Activities Act 1985, and it was repealed 10 years later, 1995. 1995. Clear? Now there is currently which act? UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. आज की डेट में ये एक्ट एप्लीकेबल है, बट आपको मैं बता दूं ये एक्ट है बहुत पुराना. 1967 this act was brought in. 1967 this act was brought in and it has been amended from time to time. So far 4 amendments have been taken place, or rather 5. It was amended in 2004. It was amended in 2008. It was amended in 2016. And it was amended in 2019.
amended in 2004, 2008, 2016 and 2019. So 2012, right? Sorry. 2012 and 2019. Clear? And other acts are still, these other acts are still there, right? One act is basically MISA Act, which was repealed again. Maintenance of Internal Security Act, MISA, which was repealed. Okay. Then also so many acts were there which have been repealed. Okay. For prevention of smuggling, there is one act that is called as COFE. PSA. Okay, COFE, POSA. 1980. 1980. Or no, it was passed in 1974, I guess. थोड़ा सा check कर लेना, हाँ. It was basically act called as Conservation of Foreign Exchange. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act. Prevention of Smuggling Act. Okay, so there was these acts have been so far passed for preventive detention, detaining individuals so that they cannot commit a crime. Preventive detention. Okay. Now यहाँ से आगे. Sir, one question here. Yeah. सर ये जो PSA है ये स्मगलिंग के लिए तो बट ये तो एप्लीकेबल बाकी लोगों पे भी होता है कॉमनली. हाँ तो PSA है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है. ये इस एक्ट का पूरा नाम है COFEPOSA. ये पूरा एक्ट का नाम है. ओके सर. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट. क्लियर? ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है. PSA पूरे पैन इंडिया लेवल पे जो लगता है UAPA, जम्मू कश्मीर में इट इज PSA. ठीक है? ओके, फाइन. नाउ we have right against exploitation. Right against exploitation, which falls under Article 23, 24. Okay? Right against exploitation. Right against exploitation. Right, and right against exploitation is Article 23, 24. Article 23, 24. But this is not sufficient to understand the scenario. You have to go, you have to dig deep. You have to dig deep. Okay. Now, when I say right against exploitation, Article 23. Article 23. What does this Article 23 talks about? And what does it deal? I have made a change in the lighting. Online people, अभी पहले lighting better था या अब better है? Online वाले लोग थोड़ा help करें. देखो एक तो ये scenario है जो अभी है. One scenario is this one जो अभी है. ठीक है? Another scenario is this one. तो आप ही के लिए ये change होता हो. अब कौन सा? This one is better, sir. This one is better. Are you sure? मतलब Okay, sir. What I feel is कि ये वाला बेटर है, लेकिन अब आप बताओ आपको जो बेटर लगेगा विल कीप. इज दिस वन बेटर या प्रीवियस वन? Previous one, sir. बाकी लोग भी बताओ. Yes, sir. ओके, सो दिस वन इज बेटर. हाँ, क्यों इश्ताक, इसमें मैं ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ? Yes, sir. सर आपका पढ़ाने का बहुत स्ट्रांग. क्या है पढ़ाने का? अंदाज बहुत अच्छा सर, मजा बहुत आता है सर. अच्छा, ठीक. फोर्स्ड लेबर. आर्टिकल 23 प्रिवेंट्स फोर्स्ड लेबर. Article 23 prevents forced labor. Forced labor named by one term that is called begar. That is called begar. An individual can never be put into forced labor. Why this article was brought in? Because majority, rather than 30 to 40% of laborers were under the forced labor, particularly the agricultural laborers. Okay? They took loans from the zamindars. Okay? When they could not repay the loans, zamindars snatched their lands first. Then, after snatching their lands, zamindars told them,
your loan is still not complete paid, you have to work on this plot for another 5 years and give all the produce to me. Some part you can take for your meager survival. Okay, so he was made a forced laborer. He was forced to work consistently on that patch of land. origin है आर्टिकल का यहां से, ठीक है। लेकिन इसके बाद फोर्स्ड लेबर की और भी कई सारी शेप्स सामने आई, ठीक है। पेरेंट्स भी कभी कभी बच्चे को काम करने के लिए फोर्स कर देते, खेत में कहीं पे भी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ओके, बेगर टेक्निकली all forms of forced labor is prohibited, article 23. Okay, plus it also prohibits traffic in human beings. It also prohibits traffic in human beings. What is traffic in human beings? बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता ये एक्सप्रेशन। ट्रैफिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमंस, नॉट एज ह्यूमंस बट एज commodities for earning. Okay, one such trafficking is child trafficking, also for forced labor, or organ trade, or also slavery, or also prostitution के लिए transport of females. Okay, all forms of traffic in human beings is also prevented by article 23. Article 23. Selling and buying of men and women is called traffic in human beings. Men and human being, men, women and children. Men, women and children. Okay. Men, women and children. For this, which act is there in the Constitution? Immoral Traffic Prevention Act. Immoral Traffic Prevention Act of 1956. Okay. One act has been passed that is called as Immoral Traffic Prevention Act of 1958. Act of 1958. Act of, sorry, 1956. And I'm not good with dates. Okay. Begar, compulsory work without remuneration. Without remuneration. Okay. Earlier, so many laws were there. Like, to prevent this, one act was called Minimum Wages Act. Minimum Wages Act. Okay. Another act was Contract Labor Act. Contract Labor Act. Another act was Contract Labor Act. Okay. Then Equal Remuneration Act. Equal Remuneration Act. Contract Labor Act. So there were so many acts. Okay. But all of them have now been clubbed into 4 labor laws. 4 labor laws, which I just told you, huh? Labor Code, Code on Wages, Code on Social Security, Code on Industrial Relations. Okay. 2020 and 2021. क्लियर? मेंस में जब ये चीजें लिखते हो ना आंसर में, एग्जामिनर का दिमाग ठिकाने आता है कि यार क्या पढ़ाई की है बच्चे ने, कि मतलब हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, करंट डेट तक बच्चा डेटा दे रहा है, ठीक है। इसलिए ये चीजें मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो आपको समझ में आ गया, दिस इज प्रिसाइजली आर्टिकल 23 फॉर यू। कोई दिक्कत अभी आर्टिकल 23 में अगर किसी को भी है तो बता सकते हो। यस, या बताओ। अच्छा, गवर्नमेंट ने आपको 15 अगस्त के दिन क्या कहा? घर में झंडा लगाओ, सेल्फी खिंचवाओ, वो अपलोड करो, ठीक है। डिड गवर्नमेंट पे यू फॉर दैट? तो किस हिसाब से गवर्नमेंट ने आपसे कोई काम जबरदस्ती करवाया विदाउट रेम्यूनरेशन? बट दिस इज इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ठीक है। तो मिलिट्री और सोशल सर्विस के कॉज के लिए इस पे भी गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको लगा सकती है। कुछ काम आपसे गवर्नमेंट ले सकती है जो विदाउट पे होगा और इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा। समझ रहे मेरी बात को? सो देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू दिस आर्टिकल आल्सो। क्लियर? आर्टिकल 24, आर्टिकल
24. Okay, it prevents child labor. It prevents child labor. Okay, please write down quickly. Huh? Prevents child labor. Okay, below age of 14 years. Below age of 14 years. Children cannot be employed. Children cannot be employed in factory, mine, and other hazardous activities. Factory, mine, or other hazardous activities. Factory, mine, or other hazardous activities. Children cannot be employed in factory, mine, and other hazardous activities. Hazardous activities. Clear? Clear? Also in 2006, extension of this article 24, huh? Extend कब किया गया ये? 2006 में कि आप डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए भी, डोमेस्टिक वर्क के लिए भी नहीं करा सकते. चाइल्ड लेबर डोमेस्टिक वर्क में भी नहीं हो सकते. डोमेस्टिक वर्क में भी ये नहीं हो सकते. चाइल्ड लेबर. ओके. Clear? Next is right to freedom of religion. Right to freedom of religion. एजाज इसको ले आओ इधर पे. Right to freedom of religion. अच्छा, religion का ना definition बड़ा vast है. You must understand. Okay, the definition of religion रख दो. Definition of religion is quite vast. हमें वो चीज जो है थोड़ा सा देखना है कि definition of religion क्या है. Okay, right. पहले लिखो. Now you can write article 24. हाँ, article 24. Article 24. इसमें 4 वर्ड्स की हैं जो आपको फोकस करने पड़ेंगे. कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रोपोगेट. हाँ, कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस. Article 25, sir. Yeah, 25. Oh, extremely sorry. Thank you. Article 25, huh? Conscience, profess, propagate, practice. Conscience, profess, propagate, practice. Okay. What does conscience means? Conscience means inner freedom of individual to relate himself to God. May relate, may not relate, may relate to any form. Clear? Allah, Ram, Rahim, Bhagwan, Vaheguru, whatever. Point 1. Point number 2, none. Atheism. Atheist, Gnostic, does not believe in any God. Clear? So all come under conscience. Or forceful conversion or forceful gharvapsi of an individual harms this part of Article 25. By will koi kuch bhi kare, you cannot, question that. But forcefully, we cannot force on anybody. Agar koi force kar raha hai, infringing Article 25 of the Constitution. Infringing which article? Article 25 of the Constitution. Clear hai? Okay. Uske baad next. What do you mean by profess? What do you mean by profess? Openly declare karna. Declare kar sakte ho. Conscience means belief. Profess means declare. Openly you can declare without any fear and prejudice. Propagate, can promote. You can tell others. But propagation does not mean conversion. ठीक है? मैं आपको हिंदुइज्म के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है? पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आ जाओ हिंदुइज्म के दायरे में. आपकी चॉइस है. बट मैं जस्ट बता रहा हूँ हिंदुइज्म इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है. सिखिज्म, इस्लाम जो भी है. ठीक है? और उसके बाद प्रोपोगेट में ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन. ठीक है? transmission and dissemination of religious information, but not conversion.
Okay, so it means propagate means transmission and dissemination. Mute karo mics. Transmission and dissemination of information, but not what? Conversion. Okay, practice means puja पाठ namaz जो भी है whatever, religious performance. Huh? Practice means religious performance. जाकिर तुम्हारा माइक अनम्यूट हो गया है. जाकिर क्या? ओके, क्या हुआ अजय? कौन से? बस 5 मिनट और दे दो, ठीक है? आर्टिकल 25. परफॉर्मेंसेस में क्या आता है? वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज एटसेट्रा. When the word in इसमें ना आर्टिकल 25 में कई दफा वर्ड हिंदू यूज हुआ है, सिक्स जैन्स वगैरह नहीं यूज हुआ, ठीक है? Then Supreme Court gave an interpretation to it. Okay, Supreme Court said that wherever Hindu word is used, it must be including Sikh, Jain and Buddhist religions also. It must include Sikh, Jains and Buddhist also. Okay, this is Article 25 for you. Okay, Article 26, freedom of management of religious affairs. Article 26 talks about freedom of management of religious affairs. Freedom of management of religious affairs. Freedom of management of religious affairs. Management of religious affairs. Okay. Affairs, whenever there is management of affairs, it means you are now talking about an institutional scheme. You are now talking about an institutional scheme that religious institutions can be set up. Every individual can manage their religious affairs. Jaise in Islam, I'll talk about Islam. There is one, one organization called Tablighi Jamaat, another organization called Jamaat Islami. Jamaat Islami is as of now banned, but there are so many other organizations. वो कैसे अपना तरीका क्या follow करते हैं, कैसे अपने religious affairs को maintain करते हैं, they are completely free for it. They are completely free for it. जैसे first of all, they can establish and manage religious institutions. Establishment and management of institutions. Point number 1. Clear? Point number 2. They can own and acquire property. Property में movable property, immovable property. Own and acquire property. And administration of the property according to law. Property में क्यों? Land for construction of temple. Land for construction of masjid. Within the land or within the masjid or within the temple, some article of gold or some article of silver or some normal article for the sake of reverence. Clear? So all those things come under ownership and acquisition of property. Movable property as well as immovable property, or movable property and immovable property. Clear? Ha. Now, both the Article 25 and Article 26 के बारे में एक बार statement आया. देखना, UPSC बहुत सीधा statement नहीं पूछती. Article 26 guarantees the right of religion to individuals, whereas Article 25 guarantees it to dominions or institutions and organizations. It is reverse. It is reverse. Article 25 grants it to individuals and Article 26 grants it to dominions, institutions and organizations. Institutions and organizations. Clear? So, because of this reason, Article 26 is also called as collective freedom of religion. Collective freedom.
of religion. And Article 25 is called as individual freedom of religion, collective freedom of religion and individual freedom of religion. Clear? ठीक है? Now, whenever you are promoting any religion, you are acquiring property for any religion, you are disposing property for any religious cause, you are not supposed to give taxes. And that protection is given to you by Article 27. Article 27. Article 27 gives you protection. Okay. Article 27 gives you freedom from taxation for promotion of religion. Freedom from taxation for promotion of religion. Okay, freedom from taxation for provision of religion. ओके अब कुछ लोगों ने कहा कि सर जब ये फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन है, व्हाई गवर्नमेंट चार्जेस अस फॉर अमरनाथ यात्रा, व्हाई गवर्नमेंट चार्जेस अस फॉर हज पिलग्रिमेज, व्हाई गवर्नमेंट चार्जेस अस फॉर कैलाश एंड अदर यात्रा. ओके, तो देन सुप्रीम कोर्ट गेव अ रूलिंग दैट it is prohibiting only taxation, it is not prohibiting fee. Fee is acceptable, fee is to be accepted. Tax you cannot pay, fee you have to pay. Okay, because secular country is a country which takes fee for every pilgrim, for any pilgrimage. Clear that? Okay, so this is basically freedom from taxation. Okay, now last one is Article 28. Article 28. Article 28 provides you the freedom of attending religious instructions. Article 28 provides you the freedom of attending religious instructions. Religious instructions. How is it possible? I'll tell you how is it possible. Freedom from attending religious instructions. What sort of religious instructions can I attend as per the Article 28, and where I can attend religious instructions as per Article 28? 5 points are to be remembered under this. Okay, point number 1 is that religious instructions cannot be given in a educational institution which is wholly maintained by state. Okay, an institution which is wholly maintained by state. No religious instructions is allowed here. No religious instructions is allowed in an institution which is wholly maintained by state. Which is wholly maintained by state. I hope it is clear. Okay. Please remember this. Okay. I am marking it in a red underline because you may remember it. कि वो इंस्टीट्यूशन जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते. ठीक है. दूसरा, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अंडर ए ट्रस्ट or endowment. Institution established under a trust or endowment. Established under a trust or endowment. Endowment means another specific organization. Okay. Established under a trust or endowment but maintained by state. But maintained by state. पहली कैटेगरी का इंस्टीट्यूशन कौन सा है? wholly maintained by state means established also by state and maintained by state. This is established by under a trust or endowment but maintained by state. यहाँ पे it is compulsory to give religious instructions. Compulsory. I am
using the word compulsory. Please follow. I'm using the word compulsory. Okay. Then institution recognized by state recognized institutions, and also state aided institutions which are not recognized but they are receiving aid from the state. यहाँ पे it is the choice of the institution, voluntary. It is the choice of the institution whether to impart religious instructions or not. Whether to impart religious instructions or not. Whether to impart instructions or not. ठीक है. अगर आपको इन दो जगहों पे कोई फोर्सफुली religious instructions दे and you are a candidate there, it is violation of your fundamental right. Get the point? यहां पे अगर फोर्सफुली भी दे, it is not violation of your fundamental right. आप खुद वहां गए हो. ठीक है. ये तो है ही किसी ट्रस्ट का, किसी इंडोमेंट के थ्रू ये इंस्टीट्यूशन है. ठीक है. वहां पे अगर आपको कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, नो इश्यूज विद दैट. आप नहीं क्लेम कर सकते कि हमें फोर्सफुली कोई रिलीजन पढ़ाया जा रहा है. हाँ, अगर इस इंस्टीट्यूशन में आपको रिलीजन पढ़ाया जा रहा है कोई भी, यू कैन गो टू द कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे टोटल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बैन है. समझ रहे मेरी बात को? सो ये चारों तरीके के इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो अटेंड करना फ्रीडम किसको दिया गया है? सिटीजन्स को, आर्टिकल 28 के थ्रू. ठीक है. सो दिस इज आर्टिकल 28 for you. So this marks an end of the religious rights, right to freedom of religion. Okay, now we have 29 and 30. They are called cultural and educational rights. Okay, article 29 and 30, they are called cultural and educational rights. Okay, so I will discuss them tomorrow. Then article 31 तो already हो चुका है, right to property में. I will discuss also that article 32 also. कल we will start fundamental rights. तो पहले 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा. उसके बाद we will start directive principles of state policy and fundamental duties. Both will be done tomorrow. Then I will take up parliament. Okay, thank you.